यार इस वीडियो का ना क्वेश्चन बहुत सिंपल है एंड आई हैव टू आस्क यू गाइस दिस एंड इट्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल. CAT VRC, is it an English test? And that is one very critical point. Those of you who are starting your prep or those of you who are in the middle of your prep need to ask yourself this question. Are you approaching it as an English test? Do you refer to it as an English section, or do you refer to it as the VARC section? That's a very critical distinction. I'm Prashant, I'm the founder of Wordpandit, and I'll take you through this question. We'll try to understand the nuances, right? The little nuances that I'm speaking about here. Uh, First thing, what CAT VRC actually tests, and that is not your English, right? Now, in RCs, they test logical tracking. Are you able to logically track what? The argument of the passage. The argument of the passage is made by the author of the passage. So they track whether you understand the argument. And here, argument means, argument does not mean getting into a fight with someone, right? Argument means the facts and the conclusions presented by the author of the passage, right? VA, verbal ability, is all about logic. And this time, this is about structural logic. So, parajumbles, misfit sentences, they ask you to identify the structure of those sentences. How would those align with each other, right? And language is the medium, not the skill here. So, language is just a medium of communication. The exam is in the English language, but that's a medium of communication. The skill here is that of logic, being able to think logically in the language. And this one single thing explains one very important thing which happens when results come out. और वो चीज़ क्या है जो ये एक्सप्लेन करती है ये चीज़? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश में, राइट, दे हैव अ वीक इंग्लिश, जिसको हम बोल सकते हैं कि उनकी इंग्लिश वीक थी. ये लोग, बहुत सारे ऐसे लोग, दे स्कोर वेल इन कैट VRC सेक्शन. एंड जब रिजल्ट आता है तो हम लोग सोच रहे थे यार ये हुआ कैसे, व्हाई डिड दिस हैपन? द रीजन फॉर दिस हैपनिंग वाज वेरी सिंपल, राइट? दीज गाइस, दे वर्कड ऑन देयर लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ the content, right? They did not focus on just the words, just the English language, whether they are whether they are able to understand the words or not. उस पर नहीं था, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक, फ्लो, ऑथर का आर्ग्यूमेंट, ऑथर क्या कह रहा है, ऑथर किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या इंप्लाई कर रहा है, क्या क्या इन्फर कर सकते हैं, फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स. सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है. पहला चीज़ जो तुम्हें अपने दिमाग में क्लैरिफाई करना है VRC प्रेप को लेके, राइट? सेकेंड थिंग इज, ये मिस आइडेंटिफिकेशन आपको कॉस्ट कैसे करती है जब आप इसको इंग्लिश की तरह देखने लग जाते हो. तो आप पहली चीज़ क्या करते हो, आप फोकस कर देते हो वोकैबुलरी पे. सो यू स्टार्ट लर्निंग एंड राइटिंग डाउन अ लॉट ऑफ वर्ड्स. नाउ आई विल बी ऑनेस्ट विद यू हियर कि यार, क्या आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी चाहिए इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए? हाँ, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करनी चाहिए. क्या आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी चाहिए कैट प्रेप के लिए? दिस हैज़ अ लिमिटेड रोल, राइट? इसको इम्प्रूव कर भी लोगे तो योर इम्प्रूवमेंट विल बी लिमिटेड, राइट? देर इज़ नो वन इन द वर्ल्ड हु कैन से कि आपने बहुत सारे नए वर्ड सीख लिए, ठीक है, और आपका अंडरस्टैंडिंग ना इम्प्रूव होगी. ऑब्वियसली आपको वर्ड्स के मीनिंग्स पता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी, बट ये एक लिमिटेड रोल है. दिस डज नॉट लेट यू, और दिस डज नॉट अलाउ यू टू थिंक लॉजिकली, राइट? आप वर्ड के मीनिंग्स पे जब फिक्सेट हो जाते हो तो आप अंडरलाइन जो लॉजिक है, जो कनेक्शन है, लॉजिकल कनेक्शन, आप उनको स्पॉट करने की तो कोशिश कर ही नहीं रहे. पॉइंट ये है कि वर्ड के मीनिंग पे ही नहीं स्टक होना, वो कंटेक्चुअली कैसे यूज हुआ है और उसके पीछे अंडरलाइंग लॉजिक क्या है, ऑथर कहना क्या चाहता है, वो समझना ज्यादा जरूरी है. सो दीज आर टू डिफरेंट स्किल्स. सो वोकैबुलरी लिस्ट्स, और एक और चीज भी हम करते हैं जब हम वर्ड्स याद करते हैं, तो वी जस्ट फोकस ऑन देयर डिक्शनरी मीनिंग एंड मेमोराइजिंग दिस. इसको मेमोराइज करने पे हम फोकस करते हैं. व्हेन वी फोकस ऑन मेमोराइजिंग दिस डिक्शनरी मीनिंग्स, वी आर नॉट लुकिंग एट देयर कंटेक्चुअल यूसेज. वो वर्ड्स यूज क्या होते हैं, यूसेज में क्या इंप्लाई करते हैं. हमारे पास डिक्शनरी मीनिंग तो हमारा रटा रटाया होता है, बट वो प्रैक्टिकली एक्चुअली यूज कैसे होता है, उसका मीनिंग क्या है, वो तो हमें फिर भी नहीं पता होता, वो तो हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा. सो हेंस वोकैबुलरी लिस्ट्स करना, रट्टे लगाना, वो वर्ड लिस्ट का इज नॉट हेल्पफुल. Newspaper reading, a lot of people, what they do is they read newspapers. And when I say newspapers, I am referring to articles here. We, in the modern day world, we read digitally.
So आज के टाइम में आई थिंक फिजिकल सब्सक्रिप्शंस तो अब ऑलमोस्ट newspapers we don't use them physically, we read them digitally only. The articles that you are reading, right? What is the mistake that we are committing with this reading? Should we read these articles? Absolutely yes. You should read, right? Reading, in fact, our previous step itself explains why you should read. You should be able to understand contexts. But हम majority of the times हम बहुत सारे आर्टिकल्स कैसे पढ़ते हैं, हम उनको एज अ पीस ऑफ न्यूज़ पढ़ते हैं, राइट? हम उनके इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स पे स्टक हो जाते हैं. वी डू नॉट लुक एट द अंडरलाइंग आर्ग्यूमेंट और लॉजिक. और हमें क्या देखने की ज़रूरत है? आर्ग्यूमेंट या लॉजिक. क्योंकि इन्फरेंस में जब आपको वो इन्फरेंस पूछेगा तो आपको पैसेज समझ आना चाहिए था, तभी तो आप उससे कुछ इन्फर कर पाओगे. मेन आइडिया पूछेगा तो आपका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पैसेज है क्या, राइट? सो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वेर यू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग लॉजिक, द अंडरलाइंग आर्ग्यूमेंट, द अंडरलाइंग मीनिंग of the context, right? Not just the meaning of the words. So this you end up doing, you might be learning words, you might be reading newspapers, but you might be doing it wrong, right? So this can also be called passive reading, right? Where you are just reading the words without really making the connections that you need to make. So passively read karna, word lists yaad karna, this might drain you of months of preparation and you would realize you have not reached anywhere. Your accuracy is still stuck. It's not improving at all. Are you one of these students who's doing this? If you are, please wake up, because this is the right time to wake up for CAT 2026 prep. So इसका बहुत ध्यान से अपना सोच के चलना, that what is it that you need to do, right? Next is what it is actually coming to the final conclusion with. ये एक्चुअली एक लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम है, राइट? सो लॉजिकल रीजनिंग यहाँ LR वाली नहीं है, ठीक है? यहाँ लॉजिकल रीजनिंग है, लैंग्वेज वाली लॉजिकल रीजनिंग, to be able to reason with the language, right? So RC is logic, not language. ये आपको ना आपका ये तकिया कलामी हो जाना चाहिए. You should just memorize this, that RC is logic. It is not language. Don't fixate on the words. What should you rather do? You should fixate on the underlying logic, argument, what is being spoken about, and what is being spoken about, why is it being spoken about, how is it being spoken about, the tone and structure. So these are all things that you need to read for, right? So what becomes your main idea? Why becomes your purpose, right? Structure becomes your, how becomes your tone or structure. So this is what you've got to read for, and that is how you've got to do stuff, right? और छोटे सा काम कर सकते हो, at the end of every paragraph, pause for 3 seconds, right? Just pause for 3 seconds and ask yourself कि इस paragraph का what is it that is, it's what, why and how, right? इसे आइडेंटिफाई कर लो. तो स्ट्रक्चरली तुम्हारे पास जो पैराग्राफ है, you will be able to understand it, right? स्ट्रक्चरली आप इस पैराग्राफ को देख पाओगे कि पैरा बाय पैरा, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, ये आपस में एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं. दैट इज समथिंग दैट यू विल बी एबल टू डू, राइट? अब एक एग्जाम्पल भी है इसका कि ये लॉजिक के ऊपर कैसे बेस्ड है. सपोजिंग एक पैसेज था जो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, और वो किसी इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो आता है उसके अंदर एक ऑप्शन है जो तुम्हें पता है इकोनॉमिक्स के हिसाब से दिस ऑप्शन इज द मोस्ट साउंड ऑप्शन, मेक्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ सेंस विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स. बट और आपको वो क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, इसका तो इकोनॉमिक्स की वजह से ये आंसर होना चाहिए. बट अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो वो एक ऐसी बात नहीं होगी जो ऑथर ने बोली है. आपको क्वेश्चन किसके हिसाब से, आप अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ोगे इट विल बी अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज. सो आपको आंसर ऑथर ऑफ द पैसेज के हिसाब से करना है. अगर ये स्टेटमेंट जो इकोनॉमिकली साउंड है पैसेज में नहीं करी गई है, राइट, एंड पैसेज में ऑथर कुछ और बोलता है, तो आप अपना पर्सनल ओपिनियन बीच में नहीं आने दे सकते, राइट? यू कैनॉट लेट योर ओन फैक्ट्स dominate the facts of the passage, the logic of the passage. The logic of the passage is always sacred, right? So that is what we stick to. Hence, please keep this in mind that RC is logic, RC is not language. So these are small little things that we'll keep in mind. And this video should actually
in a way, should do one thing. It should actually help you relax a little, right? अब आपको वर्ड्स के लिए स्ट्रेस नहीं करना, आपको वोकैबुलरी के लिए ऐसे नहीं करना कि यार अच्छा मेरे को वर्ड्स याद करनी है, मुझे एक के बाद एक वर्ड याद करना है। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब you can focus on the logic bit, the understanding bit, understanding the what, why, how of passages, and understanding the structural logic in verbal ability. These things will help you improve your scores. Or if you need additional help, our VARC course for CAT 2026 is live now. The full VARC course is available with multiple courses within it. There's a reading course, there's an RC course, there is a verbal reasoning course, there is a vocabulary course from the angle of improving your knowledge of vocabulary for non-CAT exams, right? That is for non-CAT exams, vocabulary and grammar. So this course is actually for CAT and all other non-CAT exams. So, and the test series is included as well. So all these are a part of the course itself. So the VRC course takes complete care of your CAT and non-CAT VRC exams. So I hope you go and check out the course. I hope what I said today and what I said in this video made sense, and you can practically use this in your preparation. Thank you very much for watching this video, and happy learning.